Hi everyone, let's begin with the chapter number 5 of Guyton, which is about membrane potentials and action potentials. Every membrane in the body has its own resting membrane potential. Nerves have a membrane potential of minus 70 millivolt, erythrocytes have resting membrane potential of minus 10 millivolts, and skeletal muscles have resting membrane potential of minus 90 millivolts. Now, very important, it is maintained by sodium potassium ATPase pump and potassium leakage channels. Sodium potassium ATPase pump pumps out 3 sodium ions and it pumps in two potassium ions. So two potassium are brought in, three sodium are thrown out. Now potassium is high intracellularly, right? So from low to high concentration. This is done by a pump because this is active transport. Now potassium is high inside. And now what does leakage channels do? Now there's channels, so they're going to do diffusion. So from high to low concentration. So from inside to outside. So this is the job of the voltage gated potassium channels. Remember we talked about channels in the previous video and I told you they're voltage gated and ligand gated. So these are voltage gated. So as soon as they detect any how there's some sort of change in the negativity inside, like it's losing its negativity, all of a sudden, okay, that thing I'll discuss in a while, but these are voltage gated because they respond to the electrical potential changes inside the cell. Now, resting stage is basically the polarized state. Now, what happens is that suddenly what happens is that the membrane, it becomes permeable to sodium and sodium starts flowing inward. There's more sodium out, remember that? So there'll be diffusion and the sodium voltage gated sodium channels, they're going to open. Sodium will diffuse inward. In influx of sodium, this causes depolarization. So what happens is that minus 70 millivolt, it neutralizes, so that negativity is lost. And after a little time, sodium channels close and potassium open. Potassium efflux is basically depolarization. So for now, you just need to know that sodium influx is depolarization and potassium efflux is repolarization. So for now, you just need to know that. Now, talking about okay, I hope this is established. Depolarization is sodium influx and potassium efflux is repolarization. Now, voltage gated channels, I told you, right? You have voltage gated channels, sodium also, and you also have potassium channels. Now, when you talk about the voltage gated, sorry, what right now I'm getting confused about is that why did I just give it one title when there are two channels here? This is the sodium channel and this is voltage gated potassium channel, right? So I should have made dual headings. So now your voltage gated sodium channel, it has two gates. One is the activation gate, one is the inactivation gate. The activation gate, it remains closed at all times, and inactivation gate, it remains open at all times. Now as soon as this activation gate, it gets any sort of, like, it detects that okay, there's some sort of changes in the potential. As soon as the potential starts going towards the minus 55 millivolt, which is the threshold value, your activation gate detects that and it flungs open. When that happens, sodium starts flowing in. So there's basically sodium influx. And this is what? This is depolarization, right? And I told you inactivation gate is already open. Now, after some time, inactivation gate closes, but it is slow to close. Why? Now, let me explain this in detail. अब होता क्या है कि एक्टिवेशन फॉर एग्जांपल अगर जैसे ही हमारे इस पूरे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ने डिटेक्ट किया कि अच्छा माइनस 55 मिली वोल्ट पर हमारी पोटेंशियल आ रही है, मतलब हमारी जो पोटेंशियल है वो नेगेटिविटी लूज कर रही है और पॉजिटिविटी की तरफ आ रही है, तो दो at the same time even the activation gate it will be activated, even the inactivation gate will be activated. अब inactivation gate की एक्टिवेशन का ये मतलब है कि वो बंद होगा और इसकी एक्टिवेशन का मतलब ये है कि खुलेगा. तो ये दोनों एक ही वक्त पर दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन दिस इज अ लिटिल स्लो टू रिस्पॉन्ड. तो ये स्लो रिस्पॉन्ड करता है, ये तो फौरन ही झटपट खुल जाएगा, जब ये खुल जाएगा सोडियम का इन्फ्लक्स होने लग जाएगा, लेकिन इसने स्लो रिस्पॉन्ड करना है और स्लोली ही बंद होना है, तो इसकी स्लो बंद की वजह से तब तक काफी ज्यादा सोडियम अंदर जा चुके हैं. अगर ये दोनों एक ही वक्त पर रिस्पॉन्ड करते हैं, इमेजिन इन एक्टिवेशन गेट एंड एक्टिवेशन गेट, तो फिर तो कुछ होता ही ना. जैसे ही ये खुलता फौरन ही ये बंद हो जाता, तो फिर सोडियम तो फिर इधर ही रह गया. बस फायदा ये हुआ कि यहाँ से गुजर के बस यहाँ तक आ गया, तो ये तो कुछ हुआ ही नहीं. तो दैट्स हाउ द बॉडी इज डिजाइन, राइट. नाउ इफ यू टॉक अबाउट पोटेशियम गेटेड वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स, इनका ये है कि इनका बस एक ही गेट है. तो जैसे इन्होंने देखा कि
अभी बॉडी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुकी है अंदर से, आपका जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है, तो दिस गेट इज गोइंग टू ओपन और इफ्लक्स होगा। और इफ्लक्स तो होगा, बट देन अगेन देयर इज वन मोर थिंग कि दिस एक्टिवेशन, सॉरी दिस इज नॉट एक्टिवेशन गेट, एक्टिवेशन एंड एक्टिवेशन गेट्स बस आपके सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें यही एक गेट है, तो दिस इज स्लो टू क्लोज, राइट। अब ये खुल गया, इफ्लक्स हो गया, राइट। लेकिन अब इसको वापस भी तो बंद होना है, लेकिन ये काफी स्लो होगा बंद, ठीक है। तो दैट्स अबाउट इट। तभी जिसकी वजह से हमेशा हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है, जब एक्शन पोटेंशियल होता है, एक्शन पोटेंशियल पे हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है। व्हाई? बिकॉज दिस पोटेशियम गेट इज स्लो टू क्लोज। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इनएक्टिवेशन गेट ऑफ सोडियम इज कि ये सिर्फ रिस्पॉन्ड करता है ओनली, मतलब फॉर एग्जांपल अब ये हो गया ना बंद, तो ये तब तक वापस एक्टिवेट नहीं होगा जब तक आपकी बॉडी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर वापस नहीं आ जाती, तो ये तब तक नहीं खुलेगा। तो जिसकी वजह से अब नो मैटर हाउ हार्ड द बॉडी ट्राइज, एक और एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तभी वापस इनएक्टिवेशन गेट खुलेगा और फिर आगे सोडियम का इन्फ्लक्स होगा जब पूरी बॉडी वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर आ चुकी है। जब तक -70 मिली वोल्ट्स वापस अटेन नहीं होगा तब तक ये नहीं खुलेगा। दिस इज अ गुड थिंग अबाउट योर सोडियम गेट का इनएक्टिवेशन गेट, ठीक है, सोडियम चैनल का इनएक्टिवेशन गेट। अब मूविंग ऑन, so let's read something from the book. So depolarization cause करा रहा है बेसिकली वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, क्योंकि वो खुलेगा, और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल जब खुलेगा तो डिपोलराइजेशन होगी क्योंकि पोटेशियम का इफ्लक्स हो जाएगा। उसके अलावा रेसिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कौन मेंटेन करा था, ये मैंने आपको बता दिया, सोडियम पोटेशियम पंप और पोटेशियम लीक चैनल्स है ना, ये आपका मेंटेन कर रहे थे नेगेटिविटी इनसाइड। और जो वोल्टेज जो आपके ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, या हमारा पूरा वो डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन करा रहे हैं। अब यही है कि दिस चैनल हैज टू गेट्स। Outside the channel there is an activation gate, and then inside the channel there is an inactivation gate. Resting membrane potential is -70 millivolts, right? So everything is normal. This is the configuration when resting membrane potential is there. Activation gate is closed. This prevents any entry of sodium. Membrane potential becomes less negative whenever the membrane potential becomes less negative, मतलब ये positivity की तरफ जा रही है, uh, finally it reaches -55 millivolt, which is the threshold. As soon as it reaches that, a sudden conformational change happens in the activation gate and it flips open all the way to open position. During this activated state, sodium ions they move in. So सोडियम का क्या हो रहा है, ये इनफ्लक्स हो रहा है, सोडियम बाहर ही ज्यादा था ना, तो हाई टू लो आराम से डिफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए ये चैनल है। और फिर that happens. Now the conformational change that flips the inactivation gate, अब उसके बाद ये होता है कि इनएक्टिवेशन की बात करते हैं। अब the same increase in voltage that opens the activation gate also closes the inactivation gate. However, it closes a few 10,000ths of a second after the activation gate opens. That is the conformational change that flips the inactivation gate to the closed state is a slower process than the conformational change that opens the activation gate. तो ये पूरा conformational change मतलब बिल्कुल वही, यही स्टिमुलस था जिसने इसको भी एक्टिवेट किया, इसको भी एक्टिवेट किया, लेकिन दिस फ्लिप्स ओपन सडनली, बट दिस टेक्स टाइम टू क्लोज, जिसकी वजह से थैंकफुली सोडियम अंदर चले जाता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। And another important thing about inactivation gate is that it will not reopen until the membrane potential returns to or near the original resting membrane potential. तब तक ये नहीं खुलेगा, no matter how many impulses you fire. इसको कहते हैं हम ये रिफ्रैक्टरी स्टेट कहते हैं, रिफ्रैक्टरी के। अब नो मैटर हाउ मेनी, और एक होती है एब्सोल्यूट, तो ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी स्टेट, और इसकी वजह से रिलेटिव होती है रिफ्रैक्टरी स्टेट, क्योंकि अब तो वापस आ चुका है ये पूरा अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन, मतलब ये सब नॉर्मल हो गया है, लेकिन अभी पोटेशियम क्लोज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से, बल्कि इसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन होती है, सॉरी डिड आई मेक अ मिस्टेक, इसकी वजह से रिफ्रैक्टरी पीरियड आता है, ठीक है। अब उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे कैल्शियम आयंस की, फॉर दैट आई थिंक आई नीड एन अनदर वीडियो।